अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करनी है कम्युनिकेशन 2 की। नेम द रिसेप्टर दैट इज स्टिमुलेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस। अब देखो, अगर केमिकल सब्सटेंसेस उसको इनिशिएट करवा रही हैं तो इसका मतलब ये है कि केमो रिसेप्टर होगा। नेम द केमिकल दैट आर एक्ट ऑन द नियर बाय सेल्स। ऐसे केमिकल्स का नाम बताएं जो साथ वाले सेल्स पे एक्ट करते हैं, उसे कहते हैं लोकल केमिकल मैसेंजर। Name the chemicals in the vertebrates that is produced in the gut and help to regulate the digestion. Vertebrate gut के अंदर जो chemical produce होते हैं उसे कहते हैं hormones. Name the substances produced by the mast cells in the wound that participate in the inflammatory response. Is the histamine. Name the chemical substance that is secreted by the terminal end of the axon. एक्सॉन का जो टर्मिनल एंड है वहाँ से जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है उसको आप कहते हो न्यूरोट्रांसमीटर। नेम द मैसेंजर व्हिच रीच हाई कंसंट्रेशन in the synaptic cleft, act quickly and are actively degraded and recycled। लेकिन हम पहले प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाके वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे करता है, देन एक्टिवली उसे डिग्रेड कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है और रिसाइकल कर दिया जाता है। सो द आंसर इज द न्यूरोट्रांसमीटर। Name the specialized neurons that secrete neuropeptides. Neurosecretory cells releases neuropeptides. Name the system that is the combination of the nervous and endocrine system. Combination है तो फिर neuroendocrine system. Name the media by which the neuropeptide are transported to the non-adjacent target cells. देखिए, जब भी न्यूरोपेप्टाइड्स या जो भी हार्मोन्स हैं वो नॉन एडजेसेंट सेल्स तक जाते हैं तो वो किस मीडिया के थ्रू जाते हैं या किस और वो डेफिनेटली मीडिया क्या होगा, ब्लड होगा या अदर बॉडी फ्लूइड्स होंगे। In mammals, certain nerve cells of which part of the brain releases a neuropeptide that causes the pituitary gland to release oxytocin. पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स निकल रहे हैं उनका कंट्रोल उनको बैक स्टिमुलस कौन देता है, हाइपोथैलेमस। नेम द केमिकल मैसेंजर्स रिलीज टू द एक्सटीरियर ऑफ वन एनिमल दैट अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अनदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। डेफिनेटली दीज आर द फेरोमोन्स। ये एक स्पीशी के सेम मेंबर्स के बिहेवियर्स के अंदर तब्दीलियां पैदा करते हैं। Name the system in which feedback systems regulate chemical messengers in their short and long-term coordination of animals' body functions to maintain homeostasis। तो भैया होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना है और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो इस सिस्टम को आप कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि शॉर्ट टर्म में न्यूरो नर्वस सिस्टम आ जाएगा और लॉन्ग टर्म में एंडोक्राइन सिस्टम आता है। Name the specialized chemical messenger that an endocrine or tissue produces and secretes. Hormone endocrine gland क्या produce करते हैं, इनके secretion है hormones। Name the branch of the biology that deals with the study of endocrine gland and their hormones. It is known as endocrinology। Name the cell a specific hormone influences। हार्मोन जिस पे एक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है उसे आप कहते हो टारगेट सेल। मोस्ट हार्मोन्स आर प्रोटीन्स और स्टीरॉइड्स। प्रोटीन भाई हार्मोन्स की दो तरह की नेचर्स हैं, या वो प्रोटीन होंगे या वो स्टीरॉइड्स होंगे। मोस्ट इनवर्टिब्रेट न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्रोड्यूस पॉलीपेप्टाइड्स कॉल्ड द न्यूरोपेप्टाइड्स। In most vertebrates, which cell produces neuropeptides? Neurosecretory cells releases neuropeptides. In vertebrates, nature of hormone released by the thyroid gland। थायराइड ग्लैंड के नेचर मैंने आपको बताया कि ये अमीन इन नेचर है और ये टायरोसिन डेरिवेटिव है। टायरोसिन इज द अमीनो एसिड। What is the chemical nature of the secretion of ovaries, testes and the cortex of the adrenal gland? इन तीनों के जो हार्मोन्स हैं ये स्टीरॉइड इन नेचर हैं। What are the integrative system in our body? इंटीग्रेटिव कहते हैं मुरक्कब को, तो ये न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है।
Name the system that monitor changes in the animal or in the external environment and send information to central nervous system which make adjustments. ठीक है, तो ये फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है जो एनिमल को और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मॉनिटर करता है और फिर सीएनएस को, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज देता है जिसके हिसाब से एडजस्टमेंट्स होती हैं. A feedback system that produces a response that counteracts the initiating stimulus is called negative feedback mechanism. अगर आपने कोई भी सिस्टम चल रहा है उसको स्टॉप करना है या जो स्टार्ट वाला स्टिमुलस है उसके अपोजिट चलना है तो उस कहेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. Name the systems that monitor the amount of the hormone secreted, altering the amount of cellular activity as needed to maintain homeostasis or the endocrine system. ऐसा सिस्टम जो हार्मोन की सिक्रीशन जिस को मॉनिटर कर रहा है और सेलुलर एक्टिविटी को और जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है उसे कब कहते हो? एंडोक्राइन सिस्टम. Ductless glands which pour their secretion directly into the blood are called endocrine glands. Name the hormones secreted by the thyroid gland are the T3 and the T4. Thyroid secretes its hormone under the influence of the which factor TSH. ये pituitary gland से release होता है. Rate of oxidative metabolism in the man is increased by which hormone? Thyroxine. Who can modify the biochemical activity of the target cell or the tissue? Target cell या tissue की biochemical activity को हार्मोन increase करता है. The fixed membrane receptor mechanism applies to the hormones that are proteins or amines. Name the nature of the hormone on which mobile receptor mechanism applies. Steroid. ये दो तरह के mechanism of hormonal action मैंने आपको पढ़ाए थे. Name the nature of the hormones that are lipid soluble. एक जैसी नेचर स्टीरॉइड्स हैं तो वो लिपिड के अंदर soluble हो जाएंगे. Name the nature of the hormones that are water soluble, proteins या amines. With the fixed membrane receptor mechanism which cells secrete a water soluble hormone that circulate through the blood stream. Endocrine cell. देखो कौन सा सेल है जो वाटर soluble हार्मोन को रिलीज करेगा. ठीक है, जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर सर्कुलेट करेंगे, हार्मोन रिलीज होना है तो वो डेफिनेटली एंडोक्राइन सेल से ही होगा. An endocrine cell secrete a water soluble hormone that circulate through the bloodstream. At the cells of the target organ, the hormone act as a first messenger. हार्मोन यहाँ पे अब फर्स्ट मैसेंजर होगा क्योंकि वो डायरेक्टली एक्ट कर रहा है. वो ये नहीं कर रहा कि वो जाके आगे किसी और चीज़ को एक्टिवेट करे और वो चीज़ आगे जाके फंक्शन परफॉर्म करे. The hormone receptor complex activate the enzyme in the membrane. Name that enzyme. Adenylate cyclase. The mobile receptor mechanism involves the stimulation of the protein synthesis. The first hormones were probably neurosecretions. In invertebrates, neurosecretions are called neuropeptides. The nerve cells of the hydra contain which hormone that stimulate budding, regeneration and the growth. डेफिनेटली अब ये देखो बडिंग, रीजनरेशन और ग्रोथ हो रही है तो इसे कौन प्रमोट करेगा? ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन ही करेगा. Only a few of more complex invertebrates, for example mollusks, arthropodic inoderms, have hormones other than neurosecretions. Zoologists identified neurosecretory cells in various platforms over how many years? 30 years. Neurosecretory cells in the scolex of the tapeworm control shedding of the proglottids or initiation of stabilization. स्ट्रोबलाइजेशन कहते हैं कि बॉडी के अंदर नए सेगमेंट्स का ऐड होना. तो प्रोग्लॉटिड्स का शेड अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो डेफिनेटली न्यू ऐड होते हैं प्रोग्लॉटिड्स और उसको आप कहते हो स्ट्रोबलाइजेशन. Emertians have more cephalization than platyhelminthes. सेफलाइजेशन कहते हैं कि ब्रेन का रीजन जो है या हेड के रीजन में ब्रेन डेवलपमेंट ज़्यादा होगी. तो आल्दो प्रॉपर ब्रेन नहीं है लेकिन हेड के रीजन में सेंसरी ऑर्गन्स की डेवलपमेंट ज़्यादा है प्लेटीहेल्मिन्थेस में, सॉरी इमर्शियंस में प्लेटीहेल्मिन्थेस की निस्बत.